Sorry जी about डॉक्टर। that. तो I'm not sure अगर आपको याद है, मैंने एक दफा आपको बताया था कि मेरे पेरेंट्स कराची से हैं। मैं इंग्लैंड में पैदा बड़ी हुई हूँ। तो ठीक मैंने एक्चुअली पाकिस्तान सिर्फ 2 दफा एडल्ट लाइफ में विजिट किया है। ठीक। लेकिन बचपन में आई गेस a few times. हम्म। मेरे जो ग्रैंड पेरेंट्स थे वो अफगानिस्तान के थे, और पार्टीशन से पहले वो लोग कराची, उन्होंने हिजरत की थी कराची ठीक में फॉर ठीक। ट्रेड फॉर वर्क। हम्म एंड दोनों तरफ से मदर की फैमिली और फादर की फैमिली अफगानिस्तान से पाकिस्तान आए थे। उस वक्त वो हम्म, इंडिया था। ठीक। और मेरी जो माँ की फैमिली वो दुरानी फैमिली है अफगानिस्तान की। हम्म। सो मेरे पेरेंट्स कराची में पैदा बड़े हुए। ठीक। और फिर मेरे जो फादर हैं वो एज 18 में इंग्लैंड शिफ्ट हुए जॉब के लिए। ठीक। फिर वापस आए पाकिस्तान में, अपने पड़ोसियों की बेटी से शादी की हम्म। क्योंकि वो लोग मोहल्ले में बड़े हुए। एंड ठीक फिर मम्मी को वो इंग्लैंड ले आए, और ठीक। मैं इंग्लैंड में पैदा बड़ी हुई हूँ। ठीक ठीक। तो अब आप यूएस में हैं। अब मैं कनाडा में हूँ। पहले मैं अ, थी, मैंने अपनी अंडर ग्रेजुएट डिग्री वहाँ की थी ठीक न्यूयॉर्क में। तो मैं 7 साल न्यूयॉर्क में थी। ठीक। और अबाउट 17 years ago मैं यहाँ कनाडा शिफ्ट हुई। मैंने अपने ग्रेजुएट डिग्रीज यहाँ पे की है। अच्छा, ठीक, जबरदस्त। तो सोशियोलॉजी आपका सब्जेक्ट है, यू आर पीएचडी इन सोशियोलॉजी। जी। कहाँ से um, आपने मैंने PhD? मास्टर्स भी सोशियोलॉजी में, अंडरग्रेड भी सोशियोलॉजी में किया। और जो फोकस था वो ऑन क्रिमिनोलॉजी था। सो हम्म crime and deviance, but also on migration and identity. हम्म तो as someone जो इंग्लैंड में पैदा बड़ी हुई लेकिन कल्चरल कनेक्शन पाकिस्तान से है, और हम्म। फिर एंसेस्ट्रल कनेक्शन अफगानिस्तान से है, ठीक। एक जो सवाल बार बार मेरी जिंदगी में आता रहा कि who are you, what's हम्म your cultural background, what's your ethnic background. हम्म And अक्सर मुझे इस सवाल का जवाब नहीं आता था। हम्म मैं हूँ कौन, बिकॉज टेक्निकली पासपोर्ट तो और सिटीजनशिप तो ब्रिटिश था, पैदा बड़ी ब्रिटेन में हुई थी। लेकिन बिकॉज ऑफ a lot of the racism and discrimination there, मैं हम्म अक्सर फील नहीं करती थी कि मैं ब्रिटिश हूँ। तो मुझे ऐसे नहीं लगता था कि आई बिलोंग इन इंग्लैंड। और जब मैं हम्म। पाकिस्तान गई, तो एक्चुअली उससे पहले जब हम छोटे थे तो पापा हमें किस्से सुनाया करते थे अफगानिस्तान के, और हमारे जो एंसेस्टर्स, और हमारा पुख्तनवली आपने शायद सुना होगा, एक कोड ऑफ कॉन्डक्ट होता है अ, हम्म। लोगों का। तो ठीक। वो हमें बैठकर सिखाते थे हम्म। पख्तूनवली। हाँ हाँ। और कि तुम लोग पठान हो, और पठान हम्म। होने का इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ठीक। You have to be gharatmand and respectful. हम्म You have to carry that with pride but with responsibility. तो मुझे फिर लगता था ओके, मैं अफगान हूँ, हम अफगान हैं, और हम पश्तून हैं, पठान हैं। ठीक। और इंग्लैंड में ही कुछ हमारे फ्रेंड्स थे जो अफगानिस्तान के थे, और वहाँ पे कुछ फंक्शंस हुए और हम गए वहाँ पर। और पहली दफा मुझे ऐसे लगा कि I don't fit in, like I don't feel Afghan, you know वो लोग फारसी बोलते थे, हम पश्तो, और उनका हम्म। कल्चर मुझे डिफरेंट लगता था। मुझे ठीक। ऐसे नहीं लगता था कि आई बिलोंग। तो जस्ट लाइक आई फेल्ट कि मैं इंग्लैंड में बिलोंग नहीं करती, फिर मुझे लगा कि मैं अफगानिस्तान और अफगानी कल्चर में भी मैं बिलोंग नहीं करती। फिर हम हम्म। पाकिस्तान गए। व्हेन आई वेंट टू पाकिस्तान, पहली दफा मुझे लगा ओके, दिस इज माय कल्चर। वहाँ पे
जिस तरह के कपड़े लोग पहनते, जिस तरह का खाना, हाँ, मुझे लगता था कि this is where I belong. I felt comfortable in Pakistan. But the funny thing was कि वहाँ के लोग नहीं समझते थे कि हम belong करते हैं. तो वो मजाक उड़ाते थे हमारी उर्दू का, और तुम तो अंग्रेज हो, तुम तो बाहर वाले लोग हो. एंड इवन दो मुझे लगता था कि हम पाकिस्तानी, उनको नहीं लगता था कि हम पाकिस्तानी हैं. तो मैं फिर वापस इंग्लैंड आई और मैंने सोचा कि ओके, I guess I don't belong in Pakistan either. तो you know, what is my identity? And इस सवाल से मेरी पूरी ग्रेजुएट एजुकेशन सब इस सवाल से शुरू हुई. Who am I? इंटरेस्टिंग। What is cultural identity? What is cultural identity? What is ethnic identity? What makes a person feel like they belong somewhere? And हम्म, by the time कि मेरा जो master's degree हो रहा था, that was when there was like a huge um, rise in radicalization in the UK, in America, in Canada, Pakistan, maybe. I mean, that was the buzz, right? Western discourse में बातें होती थी about extremism, radicalization, foreign fighters, ISIS जा रहे हैं fight करने. तो again मुझे ये question आया, you know, like I thought about it. How is it कि British born, well educated, successful Muslim लोग जो वहां पे हम्म, पैदा बड़े हुए हैं, जिनके पास बहुत अच्छे jobs and degrees हैं, वो क्यों जा रहे हैं to हम्म, fight for ISIS? And I suspected that it had something to do with belonging, this need to belong to something. हम्म, And that really interested me in criminology, crime and deviance, identity, what brings, you know, migration and identity together. So my education is very much, you know, impacted, and my research is very much impacted by my own personal kind of experiences. And I think कि शायद आप भी agree करो इस बात से कि, you know, जब भी, so I'll tell you कि in the Western, you know, higher education sphere, हम्म, एक सवाल बार बार उठता है objectivity का, कि हम्म, आप, you know, कि in order to be objective, you can't be part of the people you are studying. And इसकी वजह से अंग्रेज लोग जाकर हमारे मुल्कों में और you know रिमोट जगहों में एंड वहां पे जाकर रिसर्च करते थे, हम्म, एंड उसको कहते थे ऑब्जेक्टिव रिसर्च, हम्म, बिकॉज यू आर नॉट पार्ट ऑफ द पीपल. तो आप ऑब्जेक्टिवली रिसर्च कर सकते हो किसी को देखकर. ठीक। When I was in my education, I was thinking to myself, you know, I disagree with this. हम्म, Surely, in order to really understand and be able to, you know, analyze in a way that is culturally aware, हम्म, you have to have some sort of connection to those people, हम्म, because so much is missed in एग्जैक्टली। translation, interpretation. हम्म, तो मुझे हम्म, एक, you know, this really impacted me, and I decided कि I don't need to follow this very arbitrary rule in Western education that of हम्म, objectivity, it's a question of हम्म, objectivity. And it's okay कि I'm a Muslim and I am South Asian and I am studying Muslims and South Asians. If anything, now what I argue, जो मैं अब कहती हूँ लोगों को, कि anybody who has a personal connection to a topic or an idea is probably going to do a better job researching it, because एग्जैक्टली, there's something in there that inspires you and gives you passion and wants you to dig deeper. एग्जैक्टली, So एग्री। बिल्कुल ठीक कह रही है। अच्छा, मुझे ये बताइए, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है स्टोरी आपकी। वो है, मैंने प्रोफाइल में भी देखा था, मुझे ये चीज़ें फ़ील हो रही थी। मुझे पूछने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी, आपने खुद ही बता दिया कि आपने कैसे इसको, मोटिवेशन क्या थी। और अच्छा, ये बताइए कि आइडेंटिटी क्वेश्चन आपका पर्सनल लेवल पे अब सेटल हो गया? settle हो गया. ये तो क्वेश्चन जो तो था, basic, मतलब yeah. आइडेंटिटी जो है, अब ये क्वेश्चन जो था अब सेटल हो चुका है, या अभी भी ये जो जर्नी है लुकिंग फॉर योर आइडेंटिटी अभी भी जारी है?
who you So are. interestingly, what has happened is that in my quest for identity, after let's say 10 plus years of researching and digging deep into, you know, culture and ethnicity and identity, the answer that I found is that I don't need to have a one-dimensional identity. I don't need to belong to one place. I think it's okay कि, and अक्सर मैं अब कहती हूँ लोगों को, I say it as a joke sometimes, you know, I say, you know, I'm just a British-born Pakistani Afghan Muslim with an American passport who lives in Canada. It's complicated, but that's the truth. I speak 7 languages, which I think is good. I think it's something that makes you more interesting and अच्छा, कौन सी versatile. 7 लैंग्वेजेस? Well, उर्दू, English, so इंग्लिश, obviously English, Urdu, Punjabi, pretty much I can get by. पंजाबी भी आती Farsi, है? yeah. यहाँ पर actually Punjabi लोग भी बहुत है हाँ, ना, वाह, तो I kind of picked बड़ी up गल on है। it. Yeah, और उर्दू मैंने GCSEs, I don't know कि अगर आपको पता है इंग्लैंड में GCSEs होते हैं ना, तो मैंने उर्दू में GCSE की थी when I was younger. इंग्लिश, Uh, उर्दू, पंजाबी, पश्तो। English, Urdu, Punjabi, Pashto, Farsi, Dari. Farsi तो ईरानी dialect है, तो वो भी मैं बात कर लेती हूँ. And then Dari is the Afghan dialect. And बड़ी you गल know, I can get by with a little bit of French, a little bit of Arabic, but fluently, you know, Farsi, Pashto, Urdu, and English, Dari. Yeah. ग्रेट, जबरदस्त। आप तो बड़े फिर वो कहते हैं जितनी जुबानें ज्यादा आती हो उतना डिफरेंट वर्ल्ड व्यू जो है वो आप उनको समझ सकते हैं ना, वो आप इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं अपनी थिंकिंग में, थॉट प्रोसेस में। I think so. And I think a lot of it comes from art. So, you know, I have a very heavy intellectual kind of presence. You know, मैं बहुत intellectually write करती हूँ, मैं बातें करती हूँ, media में, you know, मैं interviews देती हूँ. So I have this intellectual, obviously, capability and presence. But I'm also a very big lover of art, right? So poetry, cinema, music. And I really believe that it's very much connected. And I guess this is the sociologist in me, you know, okay, music, cinema, poetry, this is all part of the human experience, being part of a society. It makes you who you are. Even in your quest for figuring out what your identity is, a big part of that is the food you eat, the music you listen to, the type of clothes you wear. So ye sab, you know, cheezein are really important that makes you who you are, right? And I also, you know, have a little bit of education also in media studies and cinema studies. So for example, one of the current studies that I'm doing is looking at the way Bollywood cinema historically has changed to remove Muslims and Islam from and the Urdu language and Muslim presence from its cinema, and how that has been like a very Hindutva kind of takeover of Bollywood even. So in my research looking at Hindutva ideology, I've looked at Bollywood cinema. So you can see कि मैं जैसे art or इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग, वाओ, क्या बात है। अच्छा, मैं थोड़ा सा एक वो जो फ्रेज है ना डिस्क्रिमिनेशन का, जो एक्सपीरियंस आप ब्रिटिश की बात कर रही हैं, फाइल में भी है, उसमें बात मैं जरूर करना चाहूंगा। उससे पहले मैं अभी मुझे ना थोड़ा सा वो हो रहा है इंटरेस्ट जनरेट के हम एक करते हैं प्रोग्राम मुकालमा के नाम से। मुकालमा मतलब डायलॉग, आप अंडरस्टैंड करती हैं? तो ये वीकली है, फ्राइडे इवनिंग्स को होता है 8:30 पे, इससे आधा घंटा पहले। अभी हमने 9 o'clock पे शुरू किया, 8:30। अच्छा अच्छा, मैं चाहूंगा कि उसमें हम आपको इनवाइट करें।
उसका फॉर्मेट ये है कि आप अगर स्पीकर के तौर पे आती हैं तो आप 30 मिनट, यू हैव 30 मिनट टू टॉक, और उसके बाद 60 मिनट क्वेश्चन आंसर हो। अच्छा, अगर अगर ऐसा होता है, ये वाली पॉसिबिलिटी है, तो आप कौन सी ऐसी थीम है जो विच इज वेरी क्लोज टू योर हार्ट, जो आप चाहेंगी कि आप मैं इस पे बात करना चाहती हूँ, तो किस पे बात करना चाहेंगी? Do you want to give me some examples के कौन सी चीजों पे आपने dialogue किया है in the past? That way it gives me an idea of the type of themes. हाँ, मैं अभी आपने उसकी बात की, सिनेमा की और परफॉर्मिंग आर्ट की, तो हमने लाइफ एंड म्यूजिक पे भी किया है, लाइफ Mm-hmm. एंड लिटरेचर पे भी किया है। अभी हमने डिजिटलाइज्ड लाइव्स, इस पे हमने किया था कि मेकिंग सेंस ऑफ लाइफ एंड लिटरेचर इन हाइपर टेक्नोलॉजिकल वर्ल्ड, ये लास्ट टाइम हमारा था। तो मैथमेटिक्स एंड लाइफ, इस पे हमने किया है। हिस्ट्री के डिफरेंट टॉपिक्स पे हमने किया है, आयशा जलाल के साथ हमने किया था, इफ यू नो। आयशा जलाल इज प्रोफेसर ऑफ हिस्ट्री बेस्ड इन यूएसए, तो उसके साथ हमने किया था हिस्ट्री पे। तो इस तरह डिफरेंट, मैं आपके उसके साथ प्रोफाइल शेयर करूंगा, वो तो इशू नहीं है। लेकिन ये है कि हम जो जो हमारा गेस्ट स्पीकर है उसको हम कहते हैं कि भी आपका जो फेवरेट थीम है, जो आपके दिल को बहुत लगता है, कि एक होता है ना कि काइंड ऑफ मैसेज भी आप कन्वे करना चाहते हैं कि भी मुझे अगर मौका मिले लोगों से बात करने का, तो मैं इस टॉपिक पे बात करना चाहूँ, तो Mm-hmm. वो ज्यादा अच्छा So होता है कि वो फिर अच्छी गुफ्तगू होती है। the truth is कि मैं बहुत different topics पे बात कर सकती हूँ as a ठीक है। sociologist. ठीक। There are so many things. हम्म। But something that maybe you haven't done, and something that I've been doing more lately, is I talk a little bit about leadership, and हम्म। especially leadership as a woman, like ठीक। female leadership and empowerment, and औरतों का, like, the हम्म। ठीक। soft skills, technical skills, and like, so for example, जब भी कोई औरत बहुत assertive होती है, तो हम्म। she gets called masculine, right? For example. लेकिन आदमी हम्म। अगर assertive हो, तो he doesn't get called rude or mean. अगर एक औरत बहुत ही, अगर एक औरत, in the job place or as a हम्म। politician or as a public figure is हम्म। very, assertive, तो हम्म। फिर लोग उसको कहते हैं कि ये बुरी है, या ये मीन है, या इसका एटीट्यूड हम्म। खराब है। ठीक। ठीक। मगर एक ठीक। मगर एक आदमी अगर ऐसे बात करे, तो हम्म। he's bold, he's strong, he's a good ठीक। leader, right? ठीक। So I ठीक। talk I talk a little bit about the ways in which हम्म। हम leadership को कैसे देखते हैं, what are the ठीक। things that ठीक। makes it ठीक। difficult एक औरत के लिए कि leadership हम्म। role ले, ठीक। and ठीक। as someone जो है leadership position में, I give tips to people. Okay, हम्म। what are the tips, as a woman to be in a position of leadership? There's हम्म। something जो यहाँ पे हम इसके बारे में काफी बात करते हैं, imposter syndrome. Have you heard of हम्म। that? Imposter syndrome. तो औरतें face a lot of imposter syndrome, हम्म। and so that's something that I talk about. So that's a ठीक। topic that we could do, something that would be very inspiring, हम्म। for people, ठीक। like ठीक। for young girls, for women, even for ठीक। men, हाँ। and public speaking. I give training and leadership advice on public speaking, how to be a ठीक। public speaker. So, ठीक। one thing that I often talk about is that, जब मैं छोटी थी, तो हम्म। इसलिए I was born and raised in England. पापा और मम्मी उर्दू भी बोलते थे, पश्तो भी बोलते थे, हम घर में पश्तो बोलते थे, और स्कूल में इंग्लिश बोलते थे. And हम्म। I remember at a young age, पापा ने मुझे कहा था कि, concentrate on your English, speak हम्म। English very well. और ठीक। उनको बहुत pride होता था, ठीक। हमारे English बोलने में. And this is something हम्म। that's quite common in Pakistan as well. I हम्म। didn't know कि ये मुझे बाद में पता चला कि this is a form of internalized colonialism. हम में हम्म। ये like it's been embedded in us कि in order to succeed,
we have to speak the language of our colonizer. वैसे English ही is the language, right? So I followed, Papa's directions, and I became very good at speaking English. So good at speaking English कि 5-6 साल पहले जब मैंने अपना पहला interview दिया था on a very major news channel here in Canada, मुझे बहुत सारे comments आए थे on all the different platforms. And there was one word that just kept getting used, eloquent. हर कोई कहता था, you're so eloquent. ठीक She's so eloquent. She's so eloquent. And मैं बार बार ये बात सुनती थी ना, ये लफ्ज मुझे फिर चुभने लगी थोड़ी सी. And आप सोचेंगे कि why would, अगर आपको कोई compliment कर रहा है, ठीक वो लफ्ज आपको चुभती क्यों है? And the reason why ये लफ्ज मुझे चुभने लगी is I am a post-colonial scholar, right? So I often talk about the partition and colonialism and internalized colonialism. And I realized that in this quest to please Papa and to be successful in the West as a child of immigrant parents, I managed to become very eloquent in English, lekin I was robbed of my eloquence in Urdu. आज की इंटरव्यू आप ले क्या लें. बात है मैंने क्या आपको कहा, मैंने आपको यस यहाँ पे थोड़ा सा रुक जाए ये जो आपने बात की है ना बहुत ही खूबसूरत बात है मतलब ये जो सेल्फ कॉन्शियसनेस है ना कि आप एक तरफ जो है आप परफॉर्म भी कर रहे हैं आपको अप्रिसिएशन भी मिल रही है लेकिन स्टिल यू आर कॉन्शियस कि भाई आप क्या कर रहे हैं ना उसमें कहाँ पे वो पैराडॉक्स कहाँ पे डेवलप हो रही है डायलेमा क्या बन रहा है उसमें वंडरफुल वंडरफुल एंड जबरदस्त मुझे फिर यही लगा कि अगर मेरा ये इंटरव्यू उर्दू में होता तो would I be able to speak as well? और फिर लोग कहते हैं कि ये तो बहुत अच्छी बातें कर रही है. Probably not. वो सोचेंगे कि ये तो हिचकिचा रही है और उसको बात करना आता ही नहीं. ठीक ठीक In English, I'm eloquent. In Urdu, I'm not. लेकिन ठीक मेरी माँ जो थी वो उर्दू में बहुत eloquent थी. उर्दू हम्म में उनकी बातें जब लोग सुनते थे कहते थे वाह. और पोएट्री मम्मी उर्दू में लिखती थी. लेकिन हम्म इंग्लैंड में मुझे याद है जब मैं छोटी थी और हम कहीं जाते थे, अगर मम्मी इंग्लिश में किसी शॉपकीपर से भी अगर कुछ पूछती थी तो वो उनको ऐसे देखते थे कि जैसे कि ये इमिग्रेंट औरत, इसको बात हम्म, करना नहीं आता. ठीक She ठीक used to face discrimination. So I हम्म actually I wrote an article about this topic. I can send it to you. ठीक So that's another thing. I often talk about this as well, so that's another topic that we can speak about, language हम्म and, eloquence and colonialism. जबरदस्त जबरदस्त अच्छा दोबारा लफ्ज आ गया डिस्क्रिमिनेशन का इस पे हम वापस आना चाह रहे थे अच्छा ये जो डिस्क्रिमिनेशन का थीम है आपके प्रोफाइल में भी और आपकी गुफ्तगू में भी डिस्क्रिमिनेशन कौन से ऐसे इंडिकेटर्स हैं कहाँ से क्या एक्सपीरियंसेस हैं जिससे आपको पता चला कि यू आर बीइंग डिस्क्रिमिनेटेड हियर इन वेस्ट जरा इसको बताइए जरा I'll start off with my earliest experience. जो सबसे पहले मुझे लगा कि I'm being treated differently. हम्म To be honest with you, जो experience था जब मैं छोटी थी in school, at the time I didn't realize. It's only in retrospect, as an adult, I was able to look back at my situation and think, wow, that was discrimination. As a child, it just hurt and I was unhappy and I didn't, I knew that it didn't feel good. But मुझे याद है जब I think I was like 7 years old and स्कूल में हम रीड करते थे और हम लिखते थे और फिर वो नोटबुक हम लाकर दिखाते थे टीचर को. एक लाइन बनती थी और फिर हम खड़े होकर 1 by 1 दिखाते थे. ठीक एंड आई रिमेम्बर मेरी जो टीचर थी वो मुझे सबके सामने शेम करती थी. हम्म She used to say things like, oh, look at Sarah's writing and look at your writing. Look how terrible this is. And I knew कि मुझे पता था कि ये this is not nice and this is not good and I felt shame and I felt disrespected. मगर
I wasn't able to articulate it, right? Like मुझे उस वक्त लफ्ज नहीं पता था कि this is हम्म discrimination. It's when a pattern got established over time through my education. You know, हम्म it started off with एक अंग्रेज टीचर, एक brown, you हम्म know, को कह रही है कि तुम्हारी राइटिंग खराब है, तुम्हारा बोलना खराब है, तुम इस पे खराब, तुम हर चीज गलत कर रही हो. फिर मैं हम्म पिकअप करती थी कि और ब्राउन लोग जो थे उनको भी ऐसे ट्रीटमेंट मिलता था, लेकिन गोरे बच्चों को ऐसा ट्रीटमेंट नहीं मिलता था. सो आई वाज एबल टू एट अ यंग एज, मैं मुझे नजर आता था देयर वाज अ डिफरेंस. देयर वाज अ हम्म डिफरेंस के ब्लैक और साउथ एशियन रेशलाइज्ड बच्चों को कैसे ट्रीटमेंट मिल रहा है स्कूल में, और अपॉर्चुनिटीज, दैट वाज अ बिग वन, कि गोरे बच्चों को अपॉर्चुनिटीज मिलते थे. आई यूज्ड टू, I loved art and performing arts at a young age. मैं वो करती थी, ऑडिशन करती थी for plays. ठीक मुझे कभी पार्ट नहीं मिलता था प्ले में, ठीक हाँ हाँ right? हाँ And even though I was really good, तो वो हम्म opportunities would say there were always barriers in my path. ठीक You know, कि मुझे वो same opportunities नहीं मिलते थे. And then ठीक fast forward to the most I would say critical moment of my educational career was when I was doing my GCSEs. और England में ये system है. I think maybe Pakistan में भी ये system है. America और Canada में ये system नहीं है. But we have an external board of examiners for the हम्म GCSEs है in ठीक England. In England. है पाकिस्तान यहाँ में यहाँ पे external board नहीं है, तो यहाँ ठीक पे आपके अपने teachers ठीक final grades आपको देते हैं, right? तो before the final exams, आपके क्लासरूम में आपकी जो टीचर होती है वो आपको प्रिडिक्टेड ग्रेड्स देती है. फिर वो प्रिडिक्टेड ग्रेड्स के मुताबिक आप अप्लाई करते हो फॉर ए लेवल्स, हाँ ठीक कॉलेज, दैट टाइप ऑफ स्टफ. ठीक व्हेन आई वाज डूइंग माय जीसीएसईज, मेरे जो प्रिडिक्टेड ग्रेड्स थे वो सारे थे सी डी, हम्म highest was B for something. They were very low. In हम्म English and English literature, मेरे जो predicted grades थे were D plus and C plus, something like that. हम्म And उसके मुताबिक मुझे acceptance नहीं मिलता कहीं भी. लेकिन फिर भी मैंने अप्लाई किया था to one of the most prestigious grammar schools for my A levels. तो मेरी ठीक जो year head है उसने मुझे अपने ऑफिस में इनवाइट किया और मुझे कहा कि you know, Sabrina, you have to be realistic. You're not going to get into Kendrick. Based on your predicted grades, you're not going to get in. So you need to have a realistic backup option. So I was always very feisty and spicy in my attitude. So I sat in that office and I said, I am going to get in. I don't care. I'm going to get in. I don't need a backup school. And she was shocked because she was like, iske to D's or C's predicted hai, pagal ladki, she's expecting to go to Kendrick, right? Fast forward to a few months, और मैंने final exams दिए. I got all A's and A star. And the reason why English में मुझे A star और A मिला. And the reason why is because जिस इंसान ने मेरा पेपर ग्रेड किया था उसको नहीं पता था कि ये मुसलमान है, ये पाकिस्तानी है, ये इंग्लिश है, ये ब्राउन है, because it was anonymous. And that was the first indicator in my life of discrimination. But if I had listened to that teacher, if I had listened to her, अगर मैंने किया होता कि, you know, I would have, it would have changed the course of my career. अच्छा सबरीना, यहाँ पे बड़ी वो मतलब पाकिस्तान में बड़ी एक मिथ है कि स्टीरियोटाइपिंग है कि गोरा जो है वो बड़ा बासूल है, बड़ा मेरिट ओरिएंटेड है, डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, ब्ला ब्ला. तो ये तो यहाँ पे तो बहुत ही लोग चेरिश करते हैं. ये जो बात आप कर रही हैं ये और भी चंद लोगों ने की है, लेकिन चंद लोगों ने की है. जनरली कि नहीं जी सिस्टम बहुत अच्छा है, मेरिट है, कोई हमें डिस्क्रिमिनेशन कभी फील नहीं हुई. अच्छा, रियली वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी इंसाइटफुल. अच्छा, इसके बाद भी ये मतलब कंटिन्यूड एक्सपीरियंस है और भी इस तरह की चीजें हुई हैं, और क्या एक्सपीरियंस है? Yes, like non-stop, you know, throughout my life, so many experiences of racism and Islamophobia. So
based on, it started with my, lack of opportunities and barriers in school. So for example, मुझे उन लोगों ने एक जैसे lower class में डाला था for mathematics. And what that meant was कि मैं जितना भी अगर hard try करूं, the highest grade I could get was a B. That was based on my teacher. ठीक अगर मुझे दूसरे क्लास में डाला होता, the higher level, I could have gotten an A. But I was limited, right? So that was another thing in high school. फिर उसके बाद I went to do my A levels. I went to university. And it's the same thing, like based on who you are, and it changed from who I was in terms of how I looked to the type of things I said and talked about. So अगर आप एक brown इंसान हो, मुसलमान इंसान हो, but you say agreeable things about the Western narrative, right? अगर मैं बैठूं और मैं बात करूं about, अगर मैंने decide किया होता to write my PhD on extremism and the problem of extremism and the Taliban and the lack of women's education and culture, अगर मैंने इन चीजों पे लिखा होता, right now I would be one of those scholars जिनको awards मिले हैं, book deals मिले हैं. You understand what I mean, right? Yes, getting your लेकिन point. because मैं उन चीजों के बारे में नहीं बात करती. मैं बात करती हूँ about the problems with the Western narrative and Western culture and discrimination and Islamophobia. तो उसकी वजह से I wasn't very liked. I wasn't. So in university, in my PhD, there was PhD another situation. आपका क्या टॉपिक क्या था PhD का? Islamophobia in the West. अच्छा. Being a Muslim in the West. That was the topic. ठीक. And basically what happened was कि यूनिवर्सिटी में एक एक्सटर्नल स्कॉलरशिप के लिए आप अप्लाई करते हो, और यहाँ पे गवर्नमेंट फंडेड एक स्कॉलरशिप है, वेरी प्रेस्टिजियस, बहुत पैसे मिलते हैं उसमें, to help you with your degree, to help you with your dissertation. हर कोई अप्लाई करता है, but the system, ऐसे दो स्कॉलरशिप थे. One was the Trudeau scholarship, Justin Trudeau का स्कॉलरशिप, और एक गवर्नमेंट फंडेड Shirk scholarship. The process for the Shirk scholarship was कि first you have to apply in your department, और एक committee है आपके department में, और वो decide करती है कि आप जाओगे further for the main government competition. Or with the Trudeau scholarship, you could apply privately. You didn't have to go through your university. You didn't have to go through your department. मैंने exact same topic पे और exact same application लिखा, और जब मैंने वो अपने department के जरिए मतलब मैंने उनको भेजा, they shut it down, or they rejected my, they didn't send me to the main scholarship. और जो Justin Trudeau का scholarship था, it was a way bigger and more prestigious and more competitive scholarship. And because I went privately, I went to the final stage. Same exact application, same topic. So doesn't that make you think कि ऐसे कैसे हो सकता है? Very interesting. So these are the ways you can see that discrimination takes place in an institutional way, right? And in a subconscious way. लोग शायद आपको कह रहे हैं कि किसी ने मुझे मेरे मुंह पे पाकी नहीं कहा, right? I don't feel discrimination क्योंकि किसी ने मेरे मुंह पे मुझे गाली नहीं दी. But that's not the only way that discrimination takes place. The more dangerous form of discrimination is जब आप किसी के income या उसके career या उसकी family life में, like that it's impacted, like their health is impacted, their education is impacted, their career is impacted, because now your livelihood is affected. ठीक. और वो स्कॉलरशिप मिल गया आपको? Yeah. जबरदस्त. तो ये कब की बात है ये?
I mean, this was 2017, I think. Yeah, 2016, 2017, when I was doing my PhD. ठीक, तो अब आप टीचिंग भी कर रही हैं कहीं? उस वक्त? नहीं, अब कर रही है टीचिंग कहीं? Yeah, now I teach, yeah. कहाँ पे? कौन सी यूनिवर्सिटी? Right now I'm teaching at Sheridan College. It's the same ठीक। place where I have my my main job, which is I'm a leader in the EDI space. So I work in the administrative kind of area of Sheridan College. That's my day job. And then I teach one course still every term, just so that I'm still in the world of teaching. But I'm also a researcher for a American research institute in Washington. So I have like a few different jobs. ठीक ठीक ठीक। तो कैसे आप ये सारे डिफरेंट परसूट्स जो है उसमें टाइम मैनेजमेंट कैसे करते You know, I've always said to people that when you have a passion for something and when you have will, then you'll always find a way to make it हैं? happen, you know. But saying that, I have to acknowledge that har aurat ko same opportunities nahi milte, because you know, maybe they're not married to men who are supportive or families that are supportive. The truth is, my father has always given a lot of value to education. तो बहुत ही छोटी उम्र में पापा ने मुझे, he never said कि लड़के education कर रहे हैं, or you know, you just worry about getting married. He in fact put maybe more emphasis on my education. बल्कि मेरे जो भाई है वो अक्सर बैठकर complain करते हैं कि, you know, Papa didn't care about our education as much as he cared about your education. And sometimes I feel कि शायद उन्होंने इसलिए किया because he specifically wanted कि उनकी बेटी educated हो, कि उसको पता हो the value of education, because दुनिया तो लड़कों को बहुत you know, like encourage or support करते हैं, लेकिन औरतों को they don't get the same support even in Western culture. So he really pushed, and वो बात मेरे सर में ऐसे click हुई थी young age में. So even though I got married at a young age and I had 4 kids, still I knew that having an education and having a career was important for me. Lekin, you know, having a supportive father, that's not enough, because अगर मेरी शादी ऐसे आदमी से हुई होती जो, you know, मुझे support नहीं करे, I probably wouldn't have been able to do this. Now, mind you, I'm a very मैंने कहा ना feisty person, so I probably wouldn't have married a man like that. And अगर हुई होती तो I would leave him and make sure I'm not in that type of a situation. But still, I'm, you know, fortunate and grateful that I have a very supportive husband. And ये बात मुझे ज़्यादा इस बात का एहसास हुआ क्योंकि एक दिन मैं गई थी, I can't remember what it was for, but I met this young Pakistani woman एक event पर, और you know, वो मुझे बहुत जैसे advice पूछ रही थी about, you know, education and this and that. मैंने उसकी story सुनी. उसके 3 छोटे बच्चे थे, and she was going to night school to finish some sort of a diploma or a degree. And I could tell talking to her that she was so passionate and इतना उसमें drive था. फिर उसने मुझे कहा कि मेरे जो husband है वो मुझे support नहीं करते, और वो बहुत मुझे मुश्किल है, मुझे रात में पढ़ना पड़ता है, और मुझे you know, बाकी सब चीजें घर की पहले खत्म करनी पड़ती है, फिर मैं छुप छुप के करती हूँ ये सब. And you know, when I heard that story, मुझे उस वक्त I knew that I had to acknowledge the fact that I have privilege, right? I was privileged to get to this point. Not every woman has that. And it's not just passion that gets you places. You have to have support and opportunity as well. अच्छा सबरीना, ये बताइए, अगर आपसे ये पूछा जाए कि just one thing which is most fascinating in your life, what is that thing? If you have to tell just one thing, it can be any place, idea, personality, whatever. One thing which is most fascinating to you. Fascinating to me?
या or about, it's टू just to me. टू यू, जो आपको बहुत फैसिनेट करती है, कोई एक चीज। Oh, जो मुझे fascinate करती है. हम्म I guess the way to answer this question is usually, let's say किसी को पता नहीं इस question का जवाब. There's one indicator, that shows you what fascinates people the most. And that is looking at the history of what they read on their phone or what they watch on YouTube. जैसे मेरे जो husband है वो रात में scroll करते हैं, right, अपने phone पर. अगर आप उसका YouTube का देखो तो mostly the videos are about exercise, about, the body, science. So you can tell that that's what fascinates him the most, how the human body works and how, and that probably has a lot to do with the fact that, he had a major injury in his life. So he's trying to like get better. अगर आप phone को अभी उठाए और उसमें scroll करे और देखे my Safari kind of like tabs or my YouTube, there are two things that you're going to find on there. One of them is articles about psychology, like human psychology, why people think the way they do, why people behave the way they do. So it's social psychology. And it fascinates me about everything. So, whether it's related to crime, whether it's related to war, what makes people take part in war, right? How does propaganda work? How does brainwashing work? How do people in societies get convinced? So when you, for example, Pakistan mein kuch saal pehle, I remember I was in my degree, I was doing my PhD, and I watched a video of two people getting lynched in Pakistan. This was one of the first times that I was very, very shocked to see the public, like publicly. And I wrote a paper on it, on group psychology. कि लोग individually बहुत moral और बहुत अच्छे लोग होते हैं, लेकिन जब वो एक group environment में आते हैं तो why do they all of a sudden उनकी जो morality, उनकी thinking change हो जाती है? So what's the difference between group psychology, individual psychology? this is really very interesting. Very interesting. अच्छा, ये कब लिखा था आपने? I wrote this a few years ago while I was doing my PhD. It was specifically on that lynching case in Pakistan. I think it was two young boys who got lynched. I think it was in Lahore. सियालकोट वाले. अच्छा, Sialkot ये आप शेयर कीजिएगा प्लीज, ये बाद में ना. I will. I'll send it to you. I wrote a paper on it. हाँ, ये आप And जरूर. ये कल भी एक इंसिडेंट हुआ है फैसलाबाद के करीब जड़ावाला में, जो 4-5 जो क्रिश्चियन जो प्लेसेस जो थी वर्शिप की, वहां पे अटैक हुआ. ये CNN पे कल चल रही थी, आपने देखा होगा. अच्छा. Yeah, I think it was somewhere. I did see something. हाँ, कल ये हुआ इस तरह. तो आज हम इसी की बात कर रहे थे कि ये मॉब साइकोलॉजी इसको एक्सप्लेन कर सकती है कि लोग इस तरह बिहेव क्यों करते हैं. Yeah, and then if you were to see them individually, आप शॉक होते हो because individually तो वो बहुत अच्छे इंसान है सारे. Some of them might even be advocates and activists. Like, what happens when people are in groups? I mean, one of the explanations is the bystander effect. We know that already. Okay, there's something called the bystander effect. कि जब आप एक bystander होते हो तो आप सोचते हो कि ओ किसी और ने फोन किया होगा पुलिस को, must be किसी ने तो कुछ कहा होगा. I don't need to because somebody else must have done it. So you rely on the morality of others. The other thing is, जब आप देखते हो आप सोचते हो कि कुछ ना कुछ तो इन लोगों ने किया होगा इसलिए तो सारे इसको ऐसे treat कर रहे हैं. There must be some validity and credibility to this behavior. So there are different reasons, and I used a lot of psychological theorists, in that paper to explain what happened. So that's one thing that fascinates me. And the other thing, this is more fun,
पर अगर आप मेरा देखो तो I'm very much interested in cinema and ठीक art and ठीक performing arts. And ठीक this is because जब मैं छोटी थी तो पापा मुझे बिठाकर फिल्में दिखाते थे, but हम्म not like पुराने black and white films, right? ठीक And ठीक ऐसे नहीं दिखाते थे कि देखो ये कितना अच्छा मतलब entertainment हाँ हाँ है, हाँ right? हाँ He used to sit me down and he जैसे आवारा, you हाँ हाँ know, हाँ पुराने हाँ फिल्म, फिर पापा मुझे हिस्ट्री बताते थे उस ठीक वक्त, the ठीक backdrop, the social backdrop to ठीक this film, कि हम्म उस वक्त राज कपूर ने क्यों ये फिल्म बनाई थी and what kind of power it had and the messaging. So I हम्म I hadn't even studied media studies at the time. मुझे नहीं पता था about semiotics and ठीक semiotic ठीक deconstruction. ठीक लेकिन पापा मुझे ये सब ठीक बताते थे. जबरदस्त जबरदस्त So it instilled in me हाँ this kind of love for cinema. ठीक And that's the other thing that you'll find that I'm fascinated about quite ठीक a lot. ठीक अच्छा इसी तरह से इसको अगर रिवर्स करें तो मोस्ट एनोइंग क्या है वन थिंग Something that I find frustrating or annoying. हम्म Um, I think what I find really frustrating right now is cancel culture. हम्म हम्म And I think what's happened, and this has happened very widely, whether it's in Pakistan, whether it's in the West, whether it's in the Muslim community, whether it's in with हम्म Democrats, liberals, jo bhi hai, हम्म we've forgotten. I consider myself a very religious person. So हम्म I conduct myself ठीक in a very faith-based way. हम्म And part of that teaches me that, human beings can be forgiven for sin or for bad behavior. At the end of the day, हम angels नहीं हैं, हम humans हैं जो गलती करते हैं, हम्म and we're complicated, we're complex beings. ठीक लेकिन लोग आजकल लोगों को बहुत one dimensional way से देखते हैं. हम्म I mean, even जब ये बात, I remember कि ये कंदील बलोच का जो incident पाकिस्तान में हुआ था, right? That was very fascinating to me because people weren't looking at the history of Kandil Baloch and what made her who she is. I know कि अभी तो इसके बारे में फिल्म भी बनी है और ठीक अब लोग बहुत इस बात को ठीक देख रहे हैं कि औरत को कैसे एक औरत कंदील बलोच बन जाती है. There's society, it's a social construction, ठीक right? ठीक ठीक Crime is a social construction, deviance is a social construction. But that applies to lots of things and lots of people. And problem is कि हम लोगों के मरने के बाद या कोई बाद हम ये सब conversations, that's when they happen, not in ठीक their lifetime. Even Junaid Jamshed, I remember, हम्म he used to get so much criticism. And after he died, he was हाँ valorized. ठीक He was put ठीक on a pedestal. ठीक ऐसे ही है And this is not something that's unique to Pakistan. ये हर जगह होता है. ये America में, Canada में, it happens everywhere, right? So I find that frustrating because I take a very critical approach to these things. Whenever I see somebody behaving badly, I try to understand what made them become that way. ठीक Even racists, right? कोई पैदा नहीं होता racist or discriminative. ठीक ठीक Society makes you become that way. ठीक ठीक So ठीक that's what I find frustrating, but I'm also working hard to dispel that way of thinking. ठीक अच्छा सबरीना ये बड़ा इंटरेस्टिंग ये बताइए कि अगर आपसे ये पूछा जाए कि कौन सी 5 things you want to do more in future what are those 5 things अगर ये कुछ चीजें तो I've already started. मैंने ये actually list बनाया था a couple of years ago of things that I wanted to do more, after my PhD and just getting older in life. I wanted to do some different things. So I've already started doing a lot of those things. But if I was to kind of like just add to that list even, I have a real passion
for building a bridge between myself and Pakistan. So, and I've said this to a few people that, you know, I have a real passion to go back to the land जहाँ पे मेरी माँ ने पहले कदम लिए थे, अपने पहली सांसें ली थी. And I've always been very interested, you know, in India, the partition, colonialism, you know, I've studied that, lekin yahan se, right? I guess one of the passions that I have, something that I really want to do, is go back to Pakistan and to do work in Pakistan. And I don't mean this in a charity way, कि मैं वहाँ पे charity do. I mean कि I want to be able to empower women there. And जो भी जैसे मैंने सीखा है या मैं हूँ, I know कि यहाँ पे मैं लोगों को बहुत, like ये लोगों को benefit करते हैं. You know, often मुझे, especially young लड़कियां आकर कहती है कि oh, you're so inspiring and तुमने मुझे inspire किया कि मैं भी education करूं, मैं भी ये करूं. I want कि मैं ये जाकर पाकिस्तान में करूं. So that's something that's like really big for me, to give back to the country that, you know, is part of the fabric of who I am. So that's one thing. Obviously, traveling is another one. I love to travel and learn about cultures and people and society. Writing, finishing my book. I already started to write my book, but it's taken so long. So finish writing my book. You know, like those types of things. I don't know if I can give you 5, but नहीं, those जरूरी are like, नहीं है, अब नंबर पूरा करना जरूरी नहीं है, ठीक है, सब्सटेंस है, इट्स ओके, जबरदस्त. अच्छा, इसी तरह से 5 things you want to do less in future. To do less. Like out of my, do you mean in my career or just behaviors? कुछ भी, anything. You know, I'm a very good speaker and I speak a lot. And something that I have learned over the last couple of years, especially as a researcher, to speak less and listen more. And that's something that I've been incorporating a lot. Okay, you know, listening is actually the more powerful tool that we have. Exactly. So I've already incorporated that a lot more. I think जब आप young होते हो, आपको लगता है कि in order to like have a presence and you know, आपको दिखाओ दुनिया के कि मैं दुनिया में कि you know मैं हूँ कोई चीज. तो फिर आपको लगता है कि मुझे बोलना है ताकि लोग मुझे सुने. But really the more powerful thing is to be able to be quiet in a room, you know, and have presence even in your silence. And that's something I've already started to do. गुड. अच्छा सबरीना, यहाँ पे थोड़ा बताइएगा, इस पे कोई अच्छी किताब है आपके ज़हन में लिसनिंग पे? To be honest, है नहीं. I haven't been able to read for fun in so many years. मैंने इतने सारे books. I have a really bad habit कि मैं collect करती हूँ books को. I order them and then they sit in my library because I never get time to read. So one of the ones that I mean to read right now, you know, you must know Gabor Mate. He's a psychiatrist, writes a lot about trauma, addiction, and psychology. So I ordered his book and I haven't even been able to read that. But if I think of something, I'll send it to you. ठीक. और क्या काम करना चाहिए? Probably just, you know, give more of myself to others as well in ways that they think that I would be, because you know there's a big difference between कि जो आपको लगता है कि आप दुनिया को देते हो and जो लोग सोचते हैं कि आप दुनिया को दे सकते हो. तो हर किसी का गिफ्ट होता है, वो बहुत डिफरेंट होता है, द गिफ्ट जो लोग देते हैं. एंड अभी रिसेंटली मेरी एक फ्रेंड से मैं मिली थी
एंड हम बात कर रहे थे और उसने मुझे कहा कि सबरीना, तुम्हें पता है कि तुम्हारा जो गिफ्ट है जो तुम दुनिया को देती हो इज योर एनर्जी। कि तुम में एक एनर्जी है और जब तुम एक कमरे में एंटर करती हो तो वो एनर्जी लोगों को एनर्जाइज करती है। ठीक। एंड उसने मुझे कहा कि तुम्हें बात करने की भी जरूरत नहीं होती, तुम्हारा प्रेजेंस जो है वो लोगों को एनर्जाइज करता है। एंड आई डिडंट नो दिस अबाउट माई सेल्फ कि ये है जो लोग पसंद करते हैं, ठीक ठीक। what people get from me. तो हम्म I would like to know more of जो लोग चाहेंगे कि मैं दूं ठीक दुनिया को। मुझे ठीक। लगता है कि मेरी राइटिंग है जो मुझे देनी है दुनिया को, मेरी बातें यू नो ठीक ठीक। बट मैंने कभी सोचा नहीं था कि मेरा प्रेजेंस और मेरी एनर्जी है जो लोग बेनिफिट करते हैं। I'd like हम्म। to learn more, ठीक ठीक and then ठीक give more. ठीक। जबरदस्त जबरदस्त। अच्छा, सबरीना ये बताइए कि एक होता है ना कि जिसको हम कहते हैं कि प्रोफाउंड लर्निंग मोमेंट, Mm. आपकी जिंदगी में कोई ऐसा लम्हा जो जिसमें बहुत ही कोई डीप लर्निंग आपकी हुई, तो एक अगर आपने पॉइंट आउट करना हो तो कौन सा है? मैंने एक्चुअली इसके बारे में काफी लिखा है, एंड इफ यू रीड सम ऑफ माय राइटिंग स्पेशली ऑन इंस्टाग्राम, मैं काफी लिखती हूँ, एंड फेसबुक एज ठीक। वेल, आई राइट अबाउट इट। एंड फॉर मी, आई थिंक जो मुझे फॉलो करते हैं उनको पता है कि देयर वाज वन मोमेंट इन माय लाइफ दैट वाज प्रोफाउंड लर्निंग। एंड हम्म लर्निंग बहुत डिफरेंट तरीके से होता है, हम्म राइट? लाइक and what you learn and the knowledge you gain, it can be different things. It can be knowledge about your career, or knowledge about life, or knowledge about health, or हम्म। and ठीक। spiritual डेफिनेटली। knowledge. And I feel that spiritual knowledge is connected to everything. To हम्म become, to learn spiritually about हम्म। yourself, about ठीक God, ठीक। about your purpose, हम्म that's the most profound learning moment हम्म in anyone's life. It's a spiritual learning. And ठीक। for me, वो हुआ था जब मेरा छोटा भाई फौत हुआ। एंड हम्म मैंने इसके बारे में लिखा भी है कि हम्म। it was ये the मैंने पढ़ा। most ठीक। हम्म profound moment मेरी जिंदगी हम्म में, the most painful, हम्म लेकिन it was precisely उस दर्द और तकलीफ में जो मुझे learning मिली, हम्म spiritual. And when I say spiritual, I don't just mean कि आप because आप कुरान पढ़ सकते हो, आप हदीस हम्म। पढ़ सकते हो, आप बुक्स पढ़ सकते हो ताकि ठीक। आपको फंडामेंटली जो इस्लाम के फंडामेंटल ट्रूथ्स है वो आपको पता चले। हम्म। लेकिन that doesn't mean that you're हाँ। learning spiritually about yourself, because at the end of the day, it's yourself that you are हम्म। trying to ठीक learn more about as a ठीक soul. ठीक। And वो मुझे उस टाइम पे पता चला, through that pain, and it changed the trajectory of my life, my career, the path that हम्म I was going to take. And I have written about this. हम्म I was writing about one particular thing, and then my brother passed away. फिर मैंने change किया अपना हम्म dissertation topic, and it pretty much informs everything मेरी जिंदगी में. हम्म My energy is informed by that loss. कि So हम्म। something that my ठीक। husband finds very annoying about me, हम्म मेरे husband बहुत इस बात पे annoy होते हैं कि मैं कभी future planning नहीं करती. I हम्म don't like talking about, उसको बहुत अच्छा लगता है घरों के बारे में बात करना, savings के बारे में बात करना और ठीक। planning, future planning, right? It's his favorite हम्म topic. And हम्म। मुझे बिल्कुल नहीं पसंद. And ठीक। मेरा जो जवाब होता है, मैं हर वक्त यही कहती हूँ, बट मुझे नहीं पता कि मैं 5 साल बाद हम्म। यहाँ हूँगी या नहीं. Why ठीक should I plan अगर ठीक मुझे यही नहीं पता कि मैं हूँ यहाँ पर? ठीक। मैं क्यों बड़ा घर लूँ, बड़ा हाँ मॉर्गेज लूँ, हाँ। और फिर I'm not even here to enjoy that house. ठीक ठीक। तो उस वक्त जो मुझे वो जो spiritual learning मिली, in हम्म a sense it shaped my energy, which is to enjoy every moment जो मैं हम्म इस
दुनिया में ठीक हूँ, ठीक I enjoy moments ठीक very deeply, very deeply. That was जबरदस्त the learning that I got. जबरदस्त। अच्छा, एक और सवाल और उसके बाद फिर हम कंक्लूजन की तरफ जाते हैं। जी। वो ये है कि एक होता है ना, फ्रीक्वेंटली फीडबैक हमें मिलती है अपनी फैमिली से, दोस्तों से। जो फ्रीक्वेंट फीडबैक आपको मिला अपने बारे में, बार बार जो सुनने को मिला कि आप ऐसे हो वैसे हो, वो क्या है? व्हाट इज दैट फीडबैक? एक तो अभी आपने दो शेयर बात, किया थोड़ी देर पहले, या अपनी एनर्जी के बारे प्रेजेंस में, जो है उसमें एनर्जी या बहुत आता है। तो लोग इसका बहुत कहते हैं, मोस्ट फ्रीक्वेंट फीडबैक क्या मिला? it's probably about my eloquence. ठीक It's probably about my ability to speak. ठीक। हम्म Storytelling, हम्म storytelling. जैसे हम्म, मैं जब भी स्टोरी सुनाती हूँ तो ठीक। बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से, और हम्म, ये मुझे वापस से मिली है ये ठीक। अच्छा, ग्रेट, trait. जबरदस्त। So, ठीक। he's a very good storyteller. हम्म जब पापा कोई स्टोरी सुनाते हैं तो हर कोई you know सुनता है बहुत ही इंटरेस्ट से. Just हाँ, stop listening to him very, ठीक very. ठीक। So ये मुझे पापा से मिली है trait of गुड। storytelling. And जो हम्म, मेरी energy है वो मुझे मेरी माँ से मिली है. That ठीक। ability to walk into a room and to live हम्म, life and enjoy life ठीक and to love ठीक ठीक। people. And the other thing is, compassion and kindness. I हम्म am a very empathetic person. So, and this is something actually, मैं पहले आपको बता रही थी about leadership, right? हम्म हम अक्सर सुनते हैं कि in order to be a great leader, you have to be very tough, right? You have to be very tough, very, almost you have to be mean in order to lead. ठीक। But I challenge that हम्म because I think that if you lead with compassion, kindness, and empathy, हम्म, you would be a ठीक। much better leader. एग्जैक्टली एग्जैक्टली। And बिल्कुल। one doesn't mean the removal of the other. You can be हम्म firm, you can be firm, you can have principles, you हम्म can know when to put your foot down on something. But at the हम्म, same time, you can be kind ठीक। and you can be compassionate. हम्म, So that's something that I get a lot, like ठीक। my leadership qualities, my leadership skills, and the fact that I'm kind and compassionate as well. हम्म, Yeah, I guess those are the things ठीक that I hear frequently from people. ठीक। जबरदस्त जबरदस्त। अच्छा सबरीना, ये बताइए, अगर कभी आप ऑटोबायोग्राफी लिखें या अपने ऊपर कोई डॉक्यूमेंट्री बनाएं या कोई मूवी बनाएं से, उसका टाइटल क्या होगा? Probably, मैंने actually इसके बारे में सोचा था because I was thinking of this title for my book. हम्म And I thought about making the title Being with a full stop. Being, हम्म, full ठीक। stop. हम्म And उसके बहुत meanings हैं, right? Because हम्म a being is a human being, हम्म, ठीक। a human being who is worthy of, and and being a being a हम्म, woman or being ठीक। anything else is irrelevant. You are a human being. But then at हम्म the same time, when you are being, when you're a हम्म being, there are different parts of your identity. You're being a woman, being a mother, being, racialized, depending on your social हम्म location, हम्म, you are being different ठीक things. ठीक। And the reason why I thought about this was Michelle Obama wrote a book called Becoming. यस। And I thought to myself that, becoming gives this, the connotation or like the kind of message with becoming is that you are
working towards becoming something. Hmm. And when you're working towards becoming something, you're Hmm. not in that present moment of being something. Hmm. Do you know Hmm. what I mean? Like you're not enjoying the Hmm. moment of the present. ठीक So ठीक for me, the title being was very powerful Hmm. because you're present in that moment and you don't have to become something else. You can just be. And also, it's inspired by kun fire kun, you Hmm. know, Hmm. when Allah says be and it is. ठीक So there are lots of different reasons why this Hmm. word being. ठीक Um, ठीक जबरदस्त वेरी इंटरेस्टिंग जबरदस्त अच्छा अब एक तो ये है कि आपने जो बात की ना कि आप यू वांट टू बिल्ड ब्रिज विद पाकिस्तान तो उसकी एक सूरत तो ये है कि आप मुकालमा ज्वाइन करें हाँ बिल्कुल मतलब हम फ्राइडे इवनिंग्स को और ये टाइम भी थोड़ा सा डिफरेंस के साथ मतलब जब आपका वो उसमें इंटरेस्ट हो आपको इंटरेस्टिंग लगे तो यू आर वेलकम टू ज्वाइन जब नहीं है तो आप ना आए उसमें तो एक तो ये सूरत उसकी हो सकती है उसमें काफी हमारे जो मेंबर्स हैं मोस्टली फैकल्टी है स्टूडेंट्स हैं और कुछ जर्नलिस्ट भी हैं पाकिस्तान से ज्यादा लोग हैं ऑफ कोर्स पाकिस्तान से बाहर से भी तो एक तो ये है एक सेशन तो खैर हम आपके साथ रखेंगे अभी नेक्स्ट मेरा ख्याल है 3 सेशन जो हैं वो स्केड्यूल्ड हैं तो हम प्लान करते हैं मीन वाइल के आपके साथ सेशन प्लान करें तो बड़ा अच्छा yeah, लगेगा timing alhamdulillah is okay. You know, मुझे actually media requests काफी आते हैं पाकिस्तान से, लेकिन हम्म उनकी टाइमिंग ऐसे होती है कि they want me to give a news interview at like 6 in the morning, which is very हम्म hard, right? Like हम्म the timing never works for me. इसलिए मैंने आपको कहा कि you know it's easiest for नहीं me to do नहीं, ये वाली it. टाइम टाइम हमारा यही है मतलब 8:30 पे हम करते हैं इसमें आप मेरा ख्याल है कि मैनेज कर सकते हैं इसमें Yeah. इतना इशू नहीं होगा अच्छा दूसरा ये है कि हम थोड़ा सा ना डिफरेंटली करते हैं जैसे कॉन्फ्रेंसेस सेमिनार्स होते हैं यू आर फेमिलियर विद दैट कि वो थोड़ा Mm-hmm. फॉर्मल होता है ना हमने उसको इंटरैक्टिव रखा है इनफॉर्मल रखा है क्योंकि मैं समझता हूँ कि हम ज्यादा सीखते हैं एक इनफॉर्मल कॉन्टेक्स्ट में जहाँ पे हम खुल के शेयर कर सकते इसलिए हमने 30 फॉर टॉक और 60 फॉर क्वेश्चन आंसर कमेंट्स रखा है ताकि पार्टिसिपेंट्स जो हैं वो खुल के एक इंटरैक्टिव एनवायरनमेंट में जो बात Yes, करना sir. चाहते हैं मुझे वो भी खुल के इंटरेक्ट बात कर जब भी मैं इनवाइटेड होती हूँ किसी सकते हैं। पैनल पर, हम्म फिर कहती हूँ कि you know don't make the speaking time very long because it's हम्म better conversation ज्यादा, क्योंकि बातें हाँ तो हाँ निकलती anyway. बिल्कुल सही है um, who wants to hear a lecture, you know? बिल्कुल सही है ऐसे ही बिल्कुल सही है अब तो लोगों में पेशेंस रहा ही नहीं है अटेंशन स्पैन भी इतना नहीं रहा तो सोशल Yeah, मीडिया की वजह exactly. से और कम हो गया अच्छा मैं ठीक है फिर थैंक यू सो Thank you. वेरी मच And I wanted to tell you that I wasn't offended or upset. In fact, I felt guilty because आपने मुझे पूछा था, and I didn't want कि आपको लगे कि ये अपने आप को क्या समझती है, नहीं or नॉट एट ऑल नॉट एट ऑल नॉट एट ऑल नॉट एट तो ऑल आपने मुझे बल्कि ये टाइम मैं अच्छा पिछली दफा मैं बिल्कुल भूल गया था वो अच्छा वो भी ये था कि क्योंकि यूजुअली ये होता है कि भाई बात हुई फेसबुक पे व्हाट्सएप नंबर ले ली व्हाट्सएप पे थोड़ा फॉलो करना आसान रहता है इसमें मैं बिल्कुल नाम भी भूल गया वो बाय चांस एक दिन आपकी तस्वीर आई पोस्ट आई ओहो मैंने मैसेंजर को क्लिक किया तो मैंने कहा यार इनके साथ तो मैंने बात की थी तो मैं बिल्कुल भूल गया अब मैं वो एक्सप्लेन भी नहीं कर सकता था मैंने कहा ये तो बहुत ही बुरी बात है ये तो ठीक नहीं है तो बहरहाल वो सेकंड टाइम फिर मैं बीमार हो गया तो इसलिए मैं गायब हो गया तो बहरहाल थैंक यू वेरी मच आई रियली एंजॉयड इट तो आप नंबर शेयर कीजिए फिर हम चीजें वी आर इन टच तो inshallah. जबरदस्त बहुत शुक्रिया Thank you थैंक यू so भाई much. बहुत मजा आया Thank you so much. Same. थैंक यू Okay. खुश रहें सलामत Khudafis. रहें इसी तरह आप मुस्कुराते रहें अल्लाह हाँ, आप खुश thank रहें you. अल्लाह हाफिज Thank you. थैंक यू भाई Khudafis. अल्लाह हाफिज